Namaste, good evening, and welcome to this online study session. We are reading Robin Sharma's book, The Monk Who Sold His Ferrari, and today is session 3. And before we begin, let us invoke for blessings. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, angels of knowledge, angels of wisdom. We humbly invoke your divine guidance, your help in understanding the book, in understanding the principles, the laws given in the book, transforming our lives, making it happier, spreading happiness around us, becoming a channel of peace, love, light, and harmony. We thank you, God. Thank you. Thank you. Shall we? Let's begin. Welcome, everybody. So here we are. Let me share with you. I hope my screen is visible and I'm audible. So it is the monk who sold his Ferrari, session 3. So this will be the flow of the session. We are finished with the invocation. We'll do the recap of session 2. तो अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है तो वेल एंड गुड जस्ट वेर क्विकली आई विल गिव यू व्हाट इट इज अबाउट। तो ये कहानी है एक लॉयर की, ठीक है, जिसका नाम है जूलियन मेंटल, और जो कि बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध और व्हाट डू यू कॉल एकदम ही सक्सेसफुल लॉयर है, ठीक है, लिटिगेशन लॉयर है। और उसके पास सब कुछ है जो कि एक इंसान चाहता है कि जितना उसको घर, दौलत, पैसा, फरारी, प्रॉपर हाउस, वेकेशन हाउस, एवरीथिंग ही हैज, नेम, फेम, हर केस वो जीतता है। बट समवेयर हिज लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस। Okay, he stopped talking to his father, his marriage is broken, his health is suffering. Okay, at the age of, I think he's 50, 43 or 50, I don't remember. So at that age, he's looking 70, correct? So that is it. And he has lost the spark of his life, basically. ठीक है, ये हमने देखा था चैप्टर 1 में, जिसका नाम था द वेकअप कॉल। ओके, सो इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर हिम, राइट? एंड ही सफर 53, ही इज 53 years old, ही लुक्स लाइक 70। और बीच खचाखच भरे हुए कोर्ट में जब वो केस लड़ रहा था, अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ता है और डॉक्टर कहते हैं उसे, या तो तुम लॉ छोड़ दो या तो जिंदगी छोड़ने की तैयारी हो चुकी है। और अचानक से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है इंडिया। ओके, तो नैरेटर जो है रॉबिन शर्मा, ही इज ऑल्सो अ लॉयर एंड ही फील्स बिट यू नो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन मिडल। ओके, सेकंड, प्लीज चेक योर इंटरनेट, इज इट ओके? Maybe your internet issues, Priyanka. Still, I'll keep my video off so that maybe it becomes more clear. Okay, so that is it. And then he goes away to India, correct, in search of truth, close to nature. Okay, अब इसी के दौरान मैं फिर से रिपीट करूंगी, हमारे एक्शन ऑफ द वीक था कि उसमें जो पॉइंटर्स थे, जब हम रीडिंग करते हैं दोस्तों, तो हम पॉइंटर्स, सिट विथ योर बुक एंड पेन और नोट डाउन इवन इन योर फोन द पॉइंटर्स विच स्ट्राइक यू देयर। ठीक है, बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो आपने रजिस्टर किया, वो लिखो। तो राइटर वहां कहते हैं लाइफ एनकरेजेस यू व्हेन यू डेयर। ठीक है, व्हेन यू डेयर, जब आप डेयरिंग करते हो ना तो जिंदगी साथ देती है। तो पॉइंटर था, अपना असाइनमेंट था वीक नंबर 1 का, कि कहाँ कहाँ आपने डेयरिंग की है और क्या जिंदगी ने आपको मौका दिया, और कहाँ कहाँ आप डेयरिंग करने से रुक रहे हो। ठीक है, कि कोई कोर्स करना है, कोई नया रास्ता चुनना है, लेकिन आप सोचते हो नहीं यार अब नहीं, भाई कैसे होगा, मुझसे होगा नहीं होगा, समय नहीं है, पैसे नहीं है, बच्चे छोटे, जो भी कंसर्न है। ठीक है, कि घर बदलना है, घर खरीदना, आप डेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट लिखना है आपकी बुक के, आपकी जिंदगी की किताब अगर आप बनती है, लिखते हो, तो उसका आप एक्नॉलेजमेंट क्या लिखोगे। दूसरा था आपके लिए सक्सेस क्या है, वर्जन क्या है, जैसे कि हमने जूलियन मेंटल का सक्सेस लिखा, करेक्ट। और उसने जो अपने सारे फ्रेंड्स को निग्लेक्ट किया हुआ था, वैसे हमें देखना है कि क्या हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत हमारे लिए प्यारे हैं, लेकिन हमें उन्हें निग्लेक्ट किया हुआ है, कॉल नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे
एक्शन फॉर द वीक 2 था, हाउ मेनी टाइम्स डू यू लाफ। तो जूलियन मेंटल जो है, हंसी खो गई थी उसकी, ही हैड स्टॉप्ड लाफिंग। तो हमें देखना था कि हम हंस रहे हैं कितनी बार। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जितनी बार भी हम हंस रहे हैं, हमें उसको इंक्रीज करना है 50% से। ठीक है। Watch the stars in the night at least for 3 nights. So because of the weather we could not. So now we see the value. ये वाला काम जो है हमारा चालू रहेगा। सनलाइट में खुद को सोक करना है। और wherever you go in the past, कहीं भी हम पास्ट के बारे में जाते हैं, सोचते हैं, तो ये देखना है कि हमने उसमें से क्या सीखा। ठीक है। दैट इज इट, दिस वॉज द सेशन 1। और सेशन 2 में दिखाया है कि जब वो इंडिया आता है और वो हिमालयस की तरफ निकल जाता है। करेक्ट। उससे पहले दिखाया है कि रॉबिन शर्मा जो है अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो अपने काम काज में लग गए हैं, अपनी फैमिली हो गई है उनकी। और उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा दुख है कि उन्हें बिना बताए जो जूलियन मेंटल है चले गए हैं। और 3 साल हो जाते हैं। 3 साल बाद अपने नरेटर की ऑफिस में, रॉबिन शर्मा के ऑफिस में एक बंदा आता है जो कि एकदम मस्त, यूथफुल, 30 के आसपास। ओके। और एकदम उसका फ्रेश फेस है उसका एकदम, और उसका फ्लैश एकदम सफल है, सपल है, सॉफ्ट फ्लैश है, बहुत ही मस्त दिख रहा है एकदम। और इसको अपने रॉबिन शर्मा को लगता है कि ये नया आदमी लगता है अब मेरी जॉब लेने आया है, लेकिन बड़ा ही सीरीन और काम लग रहा था। जैसे ही वो बंदे ने बोला कि इज दिस द वे यू ट्रीट योर विजिटर्स जॉन, इवन दोज हु टॉट यू एवरीथिंग यू नो अबाउट साइंस ऑफ सक्सेस इन द कोर्ट रूम, क्या आप उनसे ऐसे चलोगे? मैंने आपको इतने सारे ट्रेड सीक्रेट्स बताए। और जैसे ही उसने ये कहा, उनके स्टमक में एकदम से टिंगलिंग हुई और उन्होंने ये आवाज से पहचाना कि ओह, दिस इज जूलियन। आई कांट बिलीव दिस। मतलब 70 साल दिखने वाला आदमी, हार्ट स्ट्रोक लगने वाला आदमी, 3 साल में काया पलट कैसे? थर्ड चैप्टर शुरू होता है, मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल, जहां पर वो बताता है कि कैसे वो हिमालयस की ओर चल पड़ा और कैसे लोगों ने उसको बड़ा साथ दिया। लोगों ने, wherever he went, people supported him, and he could see the dynamics behind the miracles of human nature. When he wanted to understand the human nature, he went for his spiritual awakening. Okay. And this was the magical time of his life. और अब के बाद जो है, he started sharing his life, all his journey with our narrator. यहाँ पर हम रुके थे। मैं थोड़ा सा ये पेज, आई होप now you can see the screen. You can zoom and read, I hope. Okay, so we stopped here. I'll read this page. Those initial meetings with the learned and the scholarly of that exotic culture, though intriguing, did not yield the knowledge for which Julian hungered. The wisdom that he desired and the practical techniques that he hoped would change the quality of his life continued to elude him in those early days of his Odyssey. It was not until Julian had been in India for about 7 months that he had his first real break. It was while he was in Kashmir, an ancient and mystical state that sits steeply at the foot of the Himalayas, that he had a good fortune to meet a gentleman named Yogi Krishnan. तो आज के चैप्टर में है योगी कृष्णन की एंट्री, उससे मुलाकात होती है। This slight man with a clean shaven head had also been a lawyer in his previous incarnation, as he often joked with a toothy grin. तो जिंदगी में दोस्तों कई बार ऐसे होता है, हम कहते हैं कि मेरा नया इनकारनेशन है। इनकारनेशन इज रीबर्थ, सेकंड बर्थ। इफ यू लुक बैक एट योर लाइफ मेनी टाइम्स, करेक्ट, योर चाइल्डहुड और लाइफ बिफोर मैरिड, इफ यू आर मैरिड, लाइफ बिफोर योर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, और लाइफ बिफोर योर किड्स, ऐसे ही लगेगा कि अब की जो जिंदगी है वो कुछ नई जिंदगी है, राइट? तो ही सेज दैट योगी कृष्णन भी एक लॉयर थे पहले इंकारनेशन में, इसी जन्म में, लेकिन मॉन्क होने से पहले। Fed up with the hectic pace that personifies modern New Delhi, he too gave up his material possessions and retreated to the world of greater simplicity. Becoming a caretaker of the village temple, Krishnan said he had come to know himself and his purpose in the larger scheme of life.
I was tired of living my life like one long air raid drill. I realized that my mission is to serve others and somehow to contribute to making this world a better place. Now I live to give, he told Julian. I spend my days and night at this temple, living an austere but fulfilling life. I share my realizations with all those who come here to pray. I serve those in need. I am not a priest. I am simply a man who has found his soul. Julian informed this lawyer turned yogi of his own story. He spoke of his former life of prominence and privilege. He told Yogi Krishnan, yeah, he told Yogi Krishnan of his hunger for wealth and his obsession with work. He revealed with great emotion his inner turmoil and the crisis of spirit he had experienced when the once bright light of his life began to flicker in the winds of an out of balance lifestyle. I too have walked this path, my friend. I too have felt the pain you have felt. Yet, I have learned that everything happens for a reason. Very profound lines. Everything happens for a reason, offered Yogi Krishnan sympathetically. Every event has a purpose and every setback its lesson. Okay, so here comes your action for the week. Action for the week is just go through your life and find out the setbacks you got in life. What were the setbacks? Emotional setbacks, uh, could be financial setbacks, relationship setbacks. What was your lesson from it? Because you said everything happened for a reason. ओके तो ये हुआ तो आप यहाँ पर हो मुझे यहाँ पर एक कविता याद आती है स्कूल डेज में हमने पढ़ी थी फूल कांटों पे फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया हाँ फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया इतना ही याद है मुझे और ये स्कूल में तो इतना नहीं समझ आया जितना मुझे जिंदगी में समझ आया जब जिंदगी में कांटे बिखरे ये फूल कांटों में खिला था जब फूल कांटों में लगा हुआ था उस डाली पर खिला हुआ था किसी को उस पर दया आ गई कि यार इतनी इतना संघर्ष धूल मट्टी धूप इतनी तेज धूप हवा धारदार हवा आ रही है कांटे मुश्किलें तूफान उस फूल को निकाला और उसको एक सेज पे रख दिया कि ले बेटा आराम कर तू मजे में रह और वो सेज पर मुरझा गया तो ये धूल आंधी तूफान मुश्किलें सेटबैक्स it has its lessons we all are evolving and these lessons help us to shine and bloom like a flower okay तो चलिए जितने आप अच्छे सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना कहीं जो प्यारे लोग होते हैं आपको लगे कि उनके साथ बैठने में मजा आता है कहीं ना कहीं उन्होंने जिंदगी के बहुत सेटबैक्स देखे होते हैं राइट सो आई हैव रियलाइज्ड दैट फेलियर वेदर ऑफ द पर्सनल प्रोफेशनल और इवन स्पिरिचुअल काइंड is essential to personal expansion. It brings inner growth and a whole host of psychic rewards. Never regret your past. Do you regret? Question. What are the things you regret? Stop regretting your past. मैं करती हूँ कई बार ऐसे लगता है कि यार मैं वो जगह पे नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए मुझे कहीं और होना चाहिए था आई मीन वेयर एम आई टीचिंग आई शुड हैव टॉट सम बिग थिंग्स एंड क्या कर रही हूँ मैं इधर ऐसे कई बार लगता है कि सी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन रेलवेज ओके तो लगता है वाओ रेलवेज में कितनी फैसिलिटीज हैं काश मैं वहां होती ठीक है सो नेवर रिग्रेट योर पास्ट रादर embrace it as a teacher that it is. After hearing these words, Julian told me that he felt great exultation. Perhaps in Yogi Krishnan he had found the mentor he was searching for. Who better than another former hotshot lawyer who, through his own spiritual odyssey, had found a better way of living to teach him the secrets of creating a life of more balance, enchantment, and delight. I need your help, Krishnan. I need to learn how to build a richer, fuller life. I would be honored to assist you in any way that I can, offered the yogi. But may I give you one suggestion? Sure.
For as long as I have been caring for this temple in this little village, I have heard whisperings of a mystical band of sages living high in the Himalayas. Legend has it that they have discovered some sort of system. They will profoundly improve the quality of anyone's life. And I don't just mean physically. It is supposed to be a holistic, integrated set of ageless principles and timeless techniques to liberate the potential of mind, body, and soul. Julian was fascinated. This seemed perfect. Yes, friends, yes. यही है आगे की बुक. टेक्निक्स है टाइमलेस टेक्निक्स जो जूलियन मेंटल सीखा है हिमालयाज में सेजिस के पास से वो इस बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं आगे. अब तो सिर्फ बैकग्राउंड ही चल रहा है. जैसे जैसे बुक आगे आएगी मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे ये बुक ने मेरी लाइफ में क्या मूव किया था 20 साल पहले. राइट. आर यू एक्साइटेड कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यही टेक्निक्स हमें भी मिलेंगी. ये टेक्निक्स वो हैं, एजलेस प्रिंसिपल्स वो हैं जो कि ना सिर्फ हमारी लाइफ को फिजिकली चेंज करेंगे बट माइंड बॉडी और सोल को एनहांस कर देंगे. ठीक है, चलिए एक्साइटेड आगे बढ़ते हैं. जस्ट एग्जैक्टली वेयर डू दीज मॉन्क्स लिव? नो वन नोज एंड आई रिग्रेट दैट आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट सर्चिंग. बट आई विल टेल यू वन थिंग माई फ्रेंड. Many have tried to find them. I'm sorry, I don't scroll the page. I'm sorry for that. Yeah. Many have failed with tragic consequences. The higher reaches of the Himalayas are treacherous beyond compare. Even the most skilled climber is rendered helpless against their natural ravages. But if it is the golden keys to radiant health, lasting happiness, and inner fulfillment that you are searching for, I do not have the wisdom you seek. They do. See, this is the quality of a mentor. हम जब किसी को मेंटोर देखते हैं तो पहले तो ये लगता है कि जो मैंने सफर किया है वो इन्होंने भी किया है. So you have that, what you call empathy, and that feeling that हम उसी रास्ते से गुजरे हैं जिससे मैं चल रही हूँ, ये पहले गुजर चुके हैं. तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं आपका पेन क्या है, रास्ता क्या है. लेकिन असली द ट्रू मेंटोर इज वन हु इज वेरी ऑथेंटिक. जो सच कह दे कि भाई ये रास्ता मेरे पास नहीं यहाँ पर है, वही मेंटर है. क्योंकि जहां तक उसे है वो बता रहा है, नहीं है वो आगे रास्ता बताता है. ओके, दिस इज वन क्वालिटी दैट you should look for in your mentor. Correct. If he doesn't have, he shows you the way. चलिए आगे देखते हैं. Yeah, so Julian never one Julian never want to give up easily. Pressed Yogi Krishnan again. Are you certain that you have no idea where they live? All I can tell you is that the locals in this village know them as the great sages of Shivana. In their mythology, Sivana means oasis of enlightenment. These monks are revered as if they are divine in their constitution and influence. If they knew where they could be found, I would be duty bound to tell you. But honestly, I do not know. No one does, for that matter. The next morning, the first rays of the Indian sun danced along the colorful horizon. Julian set on his track to the lost land of Shivana. At first, he thought about hiring a Sherpa guide to aid him in his climb through the mountains. But for some strange reason, his instinct told him that this was one journey he would have to make alone. ये जो spiritual journey है ना, ये सबकी अलग अकेली होती है. You may have a spiritual buddy जिसके साथ आप शेयर करें, लेकिन जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, आंखें बंद करते हैं, तब आप अपने साथ होते हैं अकेले. और ये जर्नी अकेले ही तय करनी, ना आपके
Okay, I've lost the connection here. Huh? Let me connect my laptop. It will take few minutes, huh? Just a minute. I'm trying to connect. Okay, we are back now. So there was a connection issue. Let me share the screen again. Here it is. Interesting about this becoming. Yeah, I hope it is there. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So it was like, did we stop? Yeah, next page only ना. यहाँ से पढ़ते हैं हम. तो as at other times he hiked alone, using this time to silently reflect on where he had been in his life and where he was now headed. And where he was headed now headed. It did not take long before the village below was nothing more than a tiny speck on this marvelous canvas of natural splendor. The majestic of the snow-capped peaks of Himalayas made his heart beat faster, and for one long moment took his breath away. He felt a oneness with his surroundings, a kind of kinship that two old friends might enjoy after many years spent listening to each other's innermost thoughts and laughing at each other's jokes. The fresh mountain air cleared his mind and energized his spirit. Having traveled the world many times over, Julian had thought that he had seen it all, but he had never seen beauty like this. Here is action number two. Okay, action for the week number two. Please note it down. I may type it, but as and when it comes. Okay. So it is very powerful. Huh? It is about seeing the beauty in the things. Action for the week is see the beauty in the things. Beauty in the things is what? For example, a flower, okay, or a design, anywhere, anywhere. Just stop each day to see beauty. अब सी ब्यूटी क्या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं 1 सेकेंड जैसे अगर आप ये देख रहे हो ये क्या है इट्स जस्ट अ सिंपल माय डॉटर इज ब्रॉट क्या बोलते हो टाइल या समथिंग करेक्ट नथिंग आई मीन मुझे क्या लग रहा है इसमें क्या है ब्यूटी शी इज ब्रॉट इट बट शी लव्स इट इट्स लाइक व्हाट शी कॉल डोनट शी कॉल्ड इट डोनट ओके इसको बहुत ब्यूटी दिखती है अब मैंने क्या किया जब ये मैं बुक पढ़ रही थी या सेशन से पहले तो आई सेड लेट मी सी ब्यूटी so those same things which have never yeah the same things correct which are in your house or around you, correct? Which you have not noticed. I want you to notice the beauty in that, correct? Just contemplate, look at it. It could be your dress, it could be a earring, it could be anything, correct? It could be just a, it's like this an apple. Just at least 5 minutes. अलार्म लगा लो आप टाइमर लगा लो को देखो और उसमें ब्यूटी ढूंढने की कोशिश करो अब इसका जब आप कर्व देखो इसका ये जो कुछ स्टेम the colors. You just keep watching the spots on it and everything, the feel, the touch, till you really see the beauty. Right? Could be about a tree, a flower, anything. Okay. So this is very important. And if you could do it properly, you will enjoy it. Hmm? बहुत बहुत बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है ये चलिए आगे बढ़ते हैं सो ही थॉट दैट उसे लगा वो पूरी दुनिया तो उसने घूम ली है उसे सब पता है लेकिन ये जो ब्यूटी है वो उसने पहली बार देखी है it was here no sorry at once he felt joyous exhilarated and carefree it was here high above the humanity below Julian ventured out of the cocoon of the ordinary and began to explore the realm of the extraordinary
I still remember the words that were going through my mind up there, said Julian. I thought that ultimately life is all about choices. You may underline if you want, okay? One's destiny unfolds according to the choices one makes. And I felt certain that the choice I had made was the right one. I knew my life would never be the same and that something marvelous, maybe even miraculous, was about to happen to me. It was an amazing awakening. As Julian climbed into the rarefied regions of the Himalayas, me scroll. Yeah. He told me that he grew anxious, but it was those good kind of jitters like the ones I had on prom night or right before an exciting case began, and the media was chasing me up the courtroom steps. And even though I didn't have the benefit of a guide or a map, the way was clear and a thin, lightly traveled path led me higher into the deepest reaches of those mountains. It was like I had some sort of inner compass nudging me gently towards my destination. I don't think I could have stopped climbing even if I had wanted to. Julian was excited, his words spilling out like a gushing mountain stream after the rains. So, friends, when you are very, very, quiet, your mind is quiet, your mind is stable. Okay, it happens that you get the right direction, you get the answers. Okay, so what we learn here is जब आपको confusion है और कुछ समझ नहीं आता ना, तो you need to connect to your higher soul. You need to be very quiet within. क्योंकि बहुत सारा शोर चलता रहता है हमारे दिमाग में, ये करना है वो करना है, हाय क्या चल रहा है ये, यू मे बी डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज, मनी इश्यूज, रिलेशनशिप, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब आपको आंसर चाहिए तो आपके अंदर से आंसर आता है, प्रोवाइडेड यू नीड टू बी वेरी क्वाइट। और वो क्वाइट हो गए, इसलिए आपको ये ब्यूटी वाली एक्सरसाइज बोली है, किसी भी चीज में आपको कुछ देर रुक के ब्यूटी देखनी है, ठीक है? उससे क्या होता है, योर माइंड गेट स्टिलनेस। When you are still, you start getting intuition. Intuition whether your choices are right or not. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जूलियन आगे जा रहा है हिमालयाज में। ओके, ही वांट्स टू मीट द सेजेस ऑफ सिवाना। As he traveled for 2 more days along the route that he prayed would take him to Sivana, Julian's thoughts wandered back to his former life. Though he felt entirely liberated from the stress and strain that personified his former world, he did wonder whether he could really spend the rest of his days without the intellectual challenge that the legal profession had offered him since he left Harvard Law School. His thoughts then wandered back to his oak paneled office in the glittering downtown skyscraper and an idyllic summer home he had sold for a pittance. He thought about his old friends with whom he would frequent the finest of restaurants in the most glamorous locales. He also thought about his prized Ferrari and how his heart would soar when he gunned the engine and all its ferocity sprang to life with a roar. तो इतनी सारी जिंदगी ना, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इनफैक्ट घर भी हमें चेंज करना होता है, तो हम सोचते हैं यार हम कहाँ रह पाएंगे, हमें तो इसी एरिया में रहने की आदत है, हमें ये नहीं जमेगा दूसरी जगह। अब ये बंदा तो अपनी पूरी जिंदगी, पूरे पैसे, पूरी दुनिया छोड़कर हिमालय में जा रहा है, करेक्ट? तो इज वंडरिंग कि वो सारे दोस्त, वो इंटेलेक्चुअल चैलेंज, तो वो कहते हैं कि मुझे लाइक काम चाहिए, बिना काम के मैं नहीं रह सकती। तो लेट्स सी, इज वंडरिंग कि क्या वो ये अपनी जर्नी आगे कंप्लीट कर पाएगा और वो रह पाएगा बिना ग्लैमर्स के। As he ventured deeper into the depths of this mystical place, his reflections of the past were quickly interrupted by the stunning marvels of the moment. It was while he was soaking in the gifts of nature's intelligence that something startling happened. From the corner of his eye, he saw another figure, dressed strangely in a long, flowing red robe topped by a dark blue hood, slightly ahead of him, slightly ahead of him on the path. Julian was astonished to see anyone at this isolated spot that had taken him 7 treacherous days to reach। 7 दिन से लगातार हमारे जो राइटर नरेटर है वो चल रहे हैं माउंटेन्स पे, और अचानक से इस लोनली सी यात्रा में उन्हें एक बंदा दिखता है, ठीक है?
As he was many miles away from the real civilization and still uncertain as to where his ultimate destination of Sivana could be found, he yelled out to his fellow traveler. The figure refused to respond and accelerated his pace along the path they both were climbing, not even giving Julian the courtesy of a backward glance of acknowledgement. बंदे ने मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी स्पीड बढ़ा दी और फटाफट आगे जाने लगा. Soon the mysterious traveler was running, his red robe dancing gracefully behind him like crisp cotton sheets hanging from the clothesline on a windy autumn day. Please, friend, I need your help to find Sivana, yelled Julian. I've been traveling for 7 days with little food and water. I think I'm lost. The figure came to an abrupt stop. अब वो जो बंदा था वो रुक गया. Julian approached cautiously while the traveler stood remarkably still and silent. His head did not move, his hands did not move, and his feet kept their pace. Julian could see nothing of the face beneath the hood, but was struck by the contents of the small baskets in the hands of the traveler. Within the basket was a collection of the most delicate and beautiful flowers Julian had ever seen. The figure clutched the basket tighter as Julian drew nearer, as if to display both a love of these prized possessions and a distrust of this tall Westerner about a common to these parts as dew in the desert. मतलब जैसे इस एरिया में कोई वेस्टर्नर आया है तो बंदा जो है थोड़ा डिस्ट्रस्ट में देख रहा था. Julian gazed at the traveler with an intense curiosity. A quick burst of sunbeam revealed that it was a man's face under the loosely fitting hood. Hood is वो जो सिर पे टोपी जैसे ढकते हैं हम ठंड से बचने के लिए, ठीक है? But Julian had never seen a man quite like this one. Though he was at least his own age, he had striking features that left Julian mesmerized and caused him to simply stop and stare for what seemed like an eternity. His eyes were so penetrating. His eyes were cat-like, है ना? हाँ, cat-like and so penetrating that Julian was forced to look away. His olive complexioned skin was supple and smooth. His body looked so strong and powerful. And yet the man's hands gave the fact that he was not young. He radiated such an abundance of youthfulness and vitality that Julian felt hypnotized by what appeared before him, much like a child watching the magician at his first magic show. This must be one of the great sages of Shivana, Julian thought to himself, scarcely able to contain his delight at his discovery कि wow, मंजिल मिल गई. यही है वो sages जो हिमालयस में जिनसे वो मिलना चाहता था. The man looked thoughtfully. No, sorry. He says, I'm Julian Mantle. I have come to learn from the sages of Sivana. Do you know where I might find them? He asked. The man looked thoughtfully at this weary visitor from the west. His serenity and peace made him appear angelic in nature, enlightened in substance. The man spoke softly, almost in a whisper. Why is it that you seek these sages, friend? अरे इन sages को, इन साधुओं को आप क्यों ढूंढ रहे हो? Sensing that he had indeed found one of the mystical monks who had eluded so many before him, Julian opened his heart and poured out his odyssey to the traveler. He spoke of his former life and the crisis of spirit he had struggled with, how he had traded his health and his energy for the fleeting rewards that this law practice brought him. He spoke of how he had for traded the riches of his soul for a fat bank account and the illusory gratification of his live fast, die young. I think this is also a very important line. No? Live fast, die young. जितना fast आप जिंदगी में आगे जाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, उतना आप मौत को नजदीक लेते हैं. नाउ ये पॉइंट मुझे दिस इज अ लाइफस्टाइल. Lifestyle is too fast, especially nowadays, everything is instant gratification, quick. Patience बहुत कम हो चुका है. So if it is, that is a formula for dying young. Okay. So it is said that, each person has got a fixed amount of breath. ये हर एक को, गिनी चुनी हुई
सेकेंड। यस, हर एक को गिनी हुई मेजर्ड सांसें मिली हैं। और बोलते हैं ना, हर एक का समय लिखा हुआ है, रिटर्न टिकट है सभी का। जाने का समय फिक्स है। ठीक है, तो बोलते हैं हाँ गिर गए पड़ गए क्या हो गया, जब जाना होगा तब जाएंगे। ठीक है, जब जाना होगा तब जाएंगे, इट कुड बी ट्रू टू सम प्लेस। जब जाना होगा जाएंगे, नहीं जितनी चाबी राम ने भरी है उतना जिएंगे, बट कैसे जियोगे ये आपके हाथ में। सी यू मे लिव till 80, you may be on bed after 50, right? Or you may be working throughout healthy and happy and be 80. ओके, तो दैट इज इट, दैट इज व्हाट आई फील। ओके, तो जैसे कि एक गाड़ी है, आपकी बॉडी एक कार है, और उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोल भरा हुआ है। अब किसकी गाड़ी 50 लीटर की टंकी है, किसी की गाड़ी 20 लीटर की टंकी है, तो आपकी गाड़ी में तो पेट्रोल पहले से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आप और नहीं भर सकते। लेकिन आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कितनी बार आप रास्ता भटकोगे, उतना आप पेट्रोल वेस्ट करोगे, है ना। तो आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर इन लाइफ, सो दैट आप अपनी जिंदगी का रास्ता ना भटके। और जितना आप एक्सीलेटर देके फास्ट जाओगे, करेक्ट, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन पे पहुंचो ना पहुंचो, वो आपके ऊपर है, what choices you make. It's wonderful. I mean, I like this line when I read, this lifestyle. What it says is live fast, die young lifestyle. When you live fast, you want everything fast. तो अगर आपका मकसद पूरा हो गया, तो यू गो फ्रॉम हियर, राइट, आपका डेस्टिनेशन आ गया, तो आप उतर जाओ जिंदगी की गाड़ी से। And he told him of his travels in mystical India and of his meetings of Yogi Krishnan, the former trial lawyer from the New Delhi who had also given up his former life in the hope of finding inner harmony and lasting peace. The traveler remained still and silent and still. It was not until Julian spoke of his burning, almost obsessive desire to acquire ancient principles of enlightened living that the man spoke again. Placing an arm on Julian's shoulder, the man said gently, if you truly have a heartfelt desire to learn the wisdom of a better way, then it is my duty to help you. I need one of those sages that you have come so far. Sorry, I am indeed one of those sages you have come so far in search of. You are the first person to find us in many years. Are we not lucky? We are getting it written in the book by Robin Sharma. Okay, all these things. तो इसे आप पहले व्यक्ति हो जिनको ये सेज मिला है, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। Congratulations, I admire your tenacity. You must have been quite a lawyer. He offered. Tenacity क्या है? जिद। जिद क्या? कंटिन्यूएशन की, कंसिस्टेंसी की। कितनी बार हम कितनी चीजें शुरू करते हैं, जैसे कि हमने 21 डेज का मेडिटेशन चैलेंज शुरू किया है। कई लोग शुरू करते हैं जोश शोश से, 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन गायब। कुछ लोग 10 दिन करते हैं, आगे गायब। कुछ लोग 15 दिन गायब। कुछ लोग 19 दिन तक आते हैं फिर भी नहीं आ पाते। करेक्ट, तो टेनेसिटी, जिद, आखिरी समय तक कंटिन्यू करना, दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी। तो दिस विल गिव यू योर नेक्स्ट एक्शन फॉर द वीक हियर। ओके, I'll tell you at the end of this. So just remind me tenacity. Let's complete this much. We are at the end of the chapter actually. Yes, just one more page. तो हम ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि जूलियन को वन ऑफ दो सेज मिल गया 7 दिन की यात्रा के बाद। He paused, as if he was a little uncertain of what to do next, and then went on. If you like, you may come with me as my guest to our temple. It rests in a hidden part of the mountain region, still many hours away from here. My brothers and sisters will welcome you with open arms. We will work together to teach you the ancient principles and strategies that our ancestors have passed down through the years. तो ये उसको इनवाइट करते हैं, ये जो सेज उसे मिले हैं, कि आप हमारे मंदिर में आ सकते हो, जूलियन मेंटल को, और वहां रह सकते हो। सिर्फ मैं नहीं, हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी आपको यहाँ जिंदगी के जो, क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल्स हैं, ओके, गुप्त राज हैं जो जीने के, प्रॉपरली लाइफ कैसे जी जाती है, बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी जाती है, यंग कैसे दिखा जाता है इस उम्र में, ठीक है।
और जो भी हमारे पूर्वजों ने स्ट्रेटजीज टेक्निक्स बना के रखी हैं वो सब हम आपको सिखाएंगे. Before I take you to our private world and share our collected knowledge for filling your life with more joy, strength, and purpose, I must request one promise from you, said the sage. Sage उसे कहते हैं कि ये सारे knowledge जो है, secrets जो हैं, आपकी जिंदगी को खुशी से भरने वाले, ताकत से और पर्पस से भरने के लिए हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा. Upon learning these timeless truths, you must return to your homeland in the West and share this wisdom with all those who need to hear it. Though we are isolated here in these magical mountains, we are aware of the turmoil your world is in. Good people are losing their way. You must give them the hope that they deserve. Most importantly, you must give them the tools to fulfill their dreams. This is all I ask. He says that जो tools, जो साधन, जो टेक्निक, जो रास्ते हम आपको बताएंगे, आप अपने तक ना रख के जब आप दुनिया में बाहर जाओगे, आप लोगों के साथ शेयर करोगे. Correct? Very, very important. In fact, this is one of the sutra. If you know something how to better your life, you always need to share with it. Always share. If you know something, there are people who share, somebody is a good cook, correct, or has many ideas, correct, has learned by experience. They share that. I remember a friend जो कि हर बात में, it's not giving advice, but वो share करती थी कि जब खाना बनाओ तो इसको ऐसे रखो तो ये जल्दी बनता है, ये एक टिप्स है, that way. So it's very important to share any knowledge that you have, because when you go away from the world, correct, you're not going to take anything. Right? And what will you give to the world? These are the things which will always remain. These are the priceless knowledge. Knowledge is always helpful. Knowledge को share करना बहुत बहुत what I say, a very good karma. It brings back to you many many times. फिर चाहे वो आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आपको अगर कुछ आता है आप वो शेयर करें. आप एक अच्छे मैथमेटिशियन है, आप मैथ्स अच्छा आता है आप वो शेयर करें. कुछ जो आता है आप उसे शेयर करें. ओके, डोंट हिचकिचाए नहीं कुछ शेयर करने की. आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा. तो ये मॉन्क यहाँ पर इनसे यही वादा लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं. Julian instantly accepted. Okay, it's 9:53. We can complete this. Julian instantly accepted sage terms and promised that he would carry their precious message to the west. As the two men still moved higher up the mountain path to the lost village of Sivana, the Indian sun started to set. A fiery red circle, slipping into a soft magical slumber after a long and weary day. Julian told me he has never forgotten the majesty of that moment, walking with an ageless Indian monk for whom he somehow felt a brotherly love, traveling to a place he had longed to find. With all with all its wonders and many mysteries. This was definitely the most memorable moment of my life, he confided in me. Julian had always believed that life came down to a few key moments. I repeat, life came down to a few key moments. This was one of them. Deep inside his soul, he somehow sensed that this was the first moment of the rest of his life, as a life soon to be much more than it had ever been. इसकी एक न्यू जिंदगी का ये पहला दिन था. नेक्स्ट चैप्टर we will do in the next session, next Sunday, chapter 4, a magical meeting with the sages of शिवाना. तो अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम इन सेजेस से, मैजिकल सेजेस से मिलेंगे. और नेक्स्ट चैप्टर इज द स्पिरिचुअल स्टूडेंट ऑफ द सेजेस. हम इन सेजेस से जिंदगी के वो राज, वो सीक्रेट्स जो ये बुक में लिखे हैं, जो विजडम यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर द पर्सनल चेंज. ओके, होपफुली वी विल डू दैट नेक्स्ट Sunday. So let's stop here, friends, and yeah, we can discuss now. You have any questions or anything you want to share, we can. So before that, let me tell you the pointers which I felt. First thing is everything happens for a reason.
Every event has a purpose and every setback its lesson. Never regret your past. Rather enhance it as the teacher it is. Life comes down to a few key moments. तो जिंदगी क्या है? तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो प्रगति तेरी लाइफ क्या है? तो लाइफ क्या होती है? सिर्फ जो की मोमेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, लाइक some happy moments in my life from childhood. I may remember some happy moments from my youth, or some sad moments, key moments, important moments, some turning points in the life. दैट इज लाइफ. और क्या जिंदगी है? और हम सब कुछ थोड़ी याद रखते हैं. अगर मेरी जिंदगी 50 साल की, तो मैं 50 साल रिकाउंट नहीं कर पाऊंगी. लेकिन हाँ, 5 या 7 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन माई लाइफ आई कैन रिमेम्बर. या Okay, so action for the week. See the beauty around you like you have never seen before, like a flower, a tree, a leaf, a glass. It could be anything, okay? And please make a note of it. Please make a note of it. फिर दिमाग में एक्शन ना करें. आपने जो एक जर्नल बुक रखी हुई है, स्पेशली द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ऐसे टॉपिक लिख के रखें ऑनलाइन स्टडी के लिए बुक की. सर हम बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो आप उसके जो मेन पॉइंटर्स लिख के रखें, ठीक है? तो एक आपको ब्यूटी देखनी है. टेनेसिटी के लिए मैंने कहा था, तो कंसिस्टेंसी टू डू सम एक्शन, विच यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, सम हैबिट फॉर्मिंग. ओके, एग्जांपल, ऑयलिंग योर फीट बिफोर स्लीपिंग. ओके, वन मिनट, लेट मी डू दिस बिफोर स्लीपिंग. तो कोई भी एक एक्शन जो आप करते हो कुछ दिन और फिर आप रुक जाते हो, ठीक है? कि मैं रोज सोते से पहले तेल लगा के सोऊंगी, या सुबह में उठ के एक्सरसाइज करूंगी, या पहले प्राणायाम करूंगी. हम कुछ दिन करते हैं और फिर छूट जाता है कि एक्सरसाइज करूंगी कुछ दिन, फिर नहीं करते. या रोज से फॉर पर्टिकुलर हम एक चूरन वगैरह बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, हाँ हाँ ये खाएंगे, या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, जो 4 दिन खाते हैं, फिर जिंदगी की दौड़ में ट्रेडमिल में दौड़ने लग जाते हैं. तो ऐसे नहीं करना है. टेनेसिटी चिपके रहना, अड़े रहना उस पर, ठीक है? तो ऐसे आपको कोई भी एक एक्शन लेना है जो आप हमेशा से करना चाहते थे. छोटा सा एक्शन होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंसिस्टेंटली उसको नेक्स्ट संडे तक करना है, बिना रुके, एक भी दिन मिस ना किए. आप चाहे तो टाइमर लगा सकते हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है? नेक्स्ट एक्शन फॉर द वीक इज रिमेन साइलेंट. Remain silent and still for 5 minutes daily. 5 minutes is quite a time. You can start with 2 minutes also. Just still. Still is with no movement, no itching, no scratching, no moving your legs, just remaining still. बचपन में हम खेलते थे स्टैच्यू, ऐसे रुक जाते थे. ऐसे स्टैच्यू आपने खुद से खेलना है 5 मिनट्स के लिए, और एकदम स्टिल, दिमाग में भी कुछ नहीं आना चाहिए, शांत. और फॉर योर गुड हेल्थ, वन सीजनल फ्रूट एवरी डे, मे इट बी बनाना एप्पल. ओके, दिस इज फ्रॉम दिस, ये जो हैबिट मैंने कहा था कंसिस्टेंटली वाली, वो है. जो भी आप चाहें कि मैं रोज एक फ्रूट खाऊंगी, ये वाला भी आप कर सकते हो. ओके, so that is it. That is all I had to share. It is 9:58. So if anything you want to say, share, any doubts, you can. I will allow you to unmute yourself. You can. Otherwise, we'll close. Yes, I hope the session was of some value to you and you are enjoying the story and the book. Yes, anything? So do watch the recordings. Yeah, recordings will be with you for till we are. I'm not going to close it, okay? It will be with you. That's why I'm sharing it privately on Gmail. 1 session, 2 session. आप एक साल बाद भी आप सुनना चाहें, आप सुनो बैठे बैठे, आते जाते. You can listen to it like a podcast also, है ना? It's beautiful. आगे आगे और मजा आएगा. ठीक है, क्लोज करें. टर्निंग वेल. ठीक है, चलो. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, angels of wisdom, angels of knowledge, all the great, great ones, beings of internet, beings of Zoom, all the participants, Robin Sharma. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody, for joining. Good night. See you next Sunday. Bye bye.